आज मैं रियलिटी ट्रांसर्फिंग के बारे में बात करूँगा. सो व्हाट इज़ रियलिटी ट्रांसर्फिंग, व्हाट डज इट मीन. अगर तुमने कभी सुना नहीं है इस वर्ड के बारे में तो आई एक्सप्लेन इट इन डिटेल. इफ़ यू शुड read the book called Reality Transurfing or not, and what are the advantages that I have received. Plus इस पूरी टॉपिक को मैं प्रैक्टिकल वे में समझाने की कोशिश करूँगा. सो वीडियो को एंड तक देखना, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर टू लाइक इट एज वेल. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये every concept which I'm going to talk about in today's video is picked up from the book called Reality Transurfing. तो Reality Transurfing एक बुक है जो एक रशियन क्वांटम फिजिसिस्ट ने लिखा है, एंड ये बुक की 4 वॉल्यूम्स है टोटल. सो ये सारी कॉन्सेप्ट मैं वहीं से उठा के ले आया हूँ. ऑल्सो टॉफ्टी द हाई प्रिस्टेस फ्रॉम द सेम ऑथर का भी मैं रेफरेंस दूंगा इस वीडियो में. तो वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है. मेक श्योर टू वॉच इट टिल द एंड. Now back to the point again. What is reality transurfing? So इस बुक पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दिया गया है पूरा, एंड यही कॉन्सेप्ट ही रियलिटी ट्रांसर्फिंग के बेस बनता है. टू एक्सप्लेन रियलिटी ट्रांसर्फिंग इन वन वर्ड, इट बेसिकली मीन्स कि यू आर ट्रांसर्फिंग फ्रॉम वन रियलिटी टू अनदर. आई नो अभी ये साई-फाई मूवी की कोई थ्योरी की तरह लगती है, बट द Russian author who has written the book used to be a quantum physicist, and उन्होंने काफ़ी reasons दिए हैं कि why this whole theory and why the whole principle is correct. There are also several case studies of YouTubers and other person जहाँ पे they have practically used the method and seen some good results. So let's start with the videos first topic, which is gonna be vibration that we emit. So इस बुक पे कहा गया है कि every human being emit a certain vibration, and the vibration that we emit is just like radio. ठीक है, now इसको मैं explain करने से पहले I want to explain this concept in reality transurfing, जहाँ पे the author said कि to transfer from one reality to another, what we need to do is we need to emit the vibration of that particular reality. ठीक है, सपोज एक रेडियो है. रेडियो की एंटीना अगर हम इस डायरेक्शन पे मूव करते हैं तो इट कैचेस अ सर्टेन वेव लेंथ ऑफ फ्रिक्वेंसी, एंड चैनल चेंज हो जाती है. वाइल अगर दूसरे फ्रिक्वेंसी को कैच करती है तो चैनल दूसरे में चेंज हो जाती है. सिमिलरली इफ़ यू वांट टू ट्रांसफर फ्रॉम वन रियलिटी टू अनदर, author has said कि you need to emit different frequency so that universe catches it, and you transfer from one reality to another. ठीक है, now let's talk about the concept of multiverse or parallel realities or parallel universe, which the book has focused on as well. So what the book says is that there are multiple infinite universes. Anything you can think of is already there and is possible. So suppose I want to be a millionaire, so there is already a universe where Susan Adhikari is a millionaire. If I want to be a beggar, if I don't even want to be a beggar, there is already a universe where Susan Adhikari is a beggar. But the frequency that the beggar Susan emits is different from the frequency that I emit, or the frequency that millionaire Susan emit, or the frequency that Susan, who has already died young, emit. So everybody has different frequency. Now what the book says is that if you want to transfer from one reality to another, that is, you just need to change the frequency that you emit. ठीक है, अब ये फ्रीक्वेंसी डिफरेंट एमिट कैसे कर सकते हैं, हम कैसे ट्रांसर्व कर सकते हैं. तो बुक में बताया गया है कि इफ़ यू वांट टू ट्रांसर्व तो यू जस्ट नीड टू फील, एक्ट, बी, और थिंक लाइक द पर्सन whom you want to transsurf in. That is the version that you want to transsurf in, not whom, sorry, the version that you want to transsurf in. अगर मुझे मिलियनेयर सुसन बनना है तो मुझे मिलियनेयर सुसन की तरह सोचना, समझना, थिंक करना एंड फील करना पड़ेगा. तब जाके इवेंचुअली आई विल बिकम मिलियनेयर सुसन व्हेन आई एक्चुअली स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन द फ्रीक्वेंसी दैट मिलियनेयर सुसन डज. तो दैट्स द कॉन्सेप्ट. अब अगर हम इसे प्रैक्टिकल वे पे समझेंगे देन दिस इज जस्ट वेरी वेरी कॉमन सेंस की बात है ना ये. क्योंकि अगर मैं
मिलेनियर सुसन की तरह हरकतें करना लगूंगा. दैट इज इफ आई स्टार्ट रीडिंग बुक्स एवरी डे, इफ आई स्टार्ट वेकिंग अप ऑन टाइम, इफ आई स्टार्ट वर्किंग ऑन माई सेल्फ, इफ आई स्टार्ट हिटिंग द जिम, इफ आई स्टार्ट नेटवर्किंग पीपल, इफ आई स्टार्ट talking, acting, and thinking like Susan Adhikari, who is already a millionaire, eventually I'll become a millionaire. So यही concept को book in a very very you know मल्टीवर्सल वे में समझाने की कोशिश करती है, विच इज़ वेरी वेरी क्रिएटिव एंड आई लाइक द पार्ट. क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास कॉन्फिडेंस नहीं होता. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आई कैन नेवर बिकम सक्सेसफुल, आई कैन नेवर अचीव दैट. तो बुक में इट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस, क्योंकि बुक में ये कहा गया है कि देयर इज़ ऑलरेडी द वर्जन विच हैज़ अचीव्ड द थिंग दैट यू वॉन्ट टू अचीव. देयर इज़ ऑलरेडी द वर्जन विच हैज़ अचीव्ड द थिंग्स जो तुम्हें अचीव करना है. तो इससे कॉन्फिडेंस मिल जाती है. ओके, इफ आई जस्ट स्टार्ट बिहेविंग लाइक इट, आई विल इवेंचुअली ट्रांसर्फ टू दैट वर्जन, क्योंकि वो तो ऑलरेडी है वहाँ पे, है ना. सो दैट्स द फर्स्ट कॉन्सेप्ट द बुक सेज और टॉक्स अबाउट, विच इज़ वेरी 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 क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट, एंड इट हैज़ हेल्प मी अलॉट एज वेल, जो मैं बाद में बताऊँगा. ठीक है. नाउ द सेकेंड पॉइंट जो बुक बताती है, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैज़ हेल्प मी अलॉट, इज़ ऑफ कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस. अगर तुमने कभी कॉन्शियसनेस क्या होता है समझ नहीं पाए, इफ़ यू हैव नेवर understood the concept of awareness, if you have never done meditation, if you have never felt aware or conscious, then this book helps you out a lot. क्योंकि इस बुक में कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस को बहुत ही अच्छी वे में समझाया गया है, बहुत ही ईजी वे में. सो व्हाट बुक सेज इज कि कॉन्शियसनेस बेसिकली और अवेयरनेस बेसिकली इज व्हेन यू आर नाइदर थिंकिंग अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड और थिंकिंग इनवर्डली. तो बीच वाला जो स्टेट होता है, दैट्स कॉन्शियसनेस अकॉर्डिंग टू द बुक, which is actually very easily achievable if you follow the steps that the book tells you to do. ठीक है. सो जब तुम बाहर क्या हो रहा है वो नहीं सोच रहे, या फिर अंदर क्या सोच रहे हो, अंदर की थिंकिंग उससे इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो यू आर कॉन्शियस. दैट इज़ कि तुम्हें पता चल रहा है कि अंदर क्या बात हो रही है, एंड यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग इट. एंड बाहर क्या हो रहा है उसे भी तुम देख के यू आर नॉट लॉस्ट एट इट, बट इंस्टेड ऑब्जर्विंग इट, देन यू आर कॉन्शियस. तो बुक व्हाट बुक सेज इज की you need to be conscious 24/7. Book also says that a lot of the people are sleeping in this wake reality. ये जो reality है अभी, book says कि it's just an illusion and it's just a dream. So ये सब book, these are the things that book says. And one of the important thing which book says, which is very very true and made me put me in awe, is कि we are asleep at this reality. तो इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोग they're very very unconscious. अभी तुम whatever you do it in a very unconscious state. Suppose you're eating the food, वो भी तुम unconsciously कर रहे हो. गेम खेल रहे थे, सीधा उठ लिया, चल लिया, खा लिया, because somebody asked to or because you felt like it. You're not conscious. You are not aware कि you're hungry and you are taking the steps to go to the kitchen and eat food. You're just doing it unconsciously. So when I was reading the book, it said कि a lot of people are asleep. Wake up. The book had that line, and I was, oh. Yeah, I was asleep. It was just an awe moment for me, and I felt it very amazing. So you will come across a lot of points which keeps you in awe while reading the book. Okay? So what book suggests is to be awake 24/7, and when you are aware 24/7, you can get rid of the old yourself, and you can start vibrating in the different vibration. Because if you're not in awareness, then तुम्हारी जो ये old self है, that would keep coming back, and you would be in your old circle again, in your old self, and it will be like a circle again and again and again. So the book suggests to be awake 24/7, and उसमें एक exercise भी बताया गया है, which I will not cover in this video as it will be very very long video otherwise. So talking about this point in a very practical way, so this is also very very creatively done. अगर मैं अवेयर रहूँगा तो मैं अपनी ओल्ड हैबिट्स को ओल्ड हैबिट्स को लीव कर पाऊँगा. आई विल बी एबल टू गेट रिड ऑफ माई ओल्ड हैबिट्स. एंड बुक में ये इज़ गिवन इन द ओल्ड सेल्फ एंड द सेल्फ दैट यू वांट टू ट्रांसफर टू. बट बेसिकली ये बहुत सारी डिफरेंट बुक्स में इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बताया गया है. जैसे आई थिंक एटॉमिक हैबिट्स, या फिर देयर इज़ अनदर बुक कॉल्ड हैबिट या समथिंग like that as well, जहाँ पे भी बताया गया है कि if you want to get rid of your habit, you need to be aware about it first. तो that is the very good concept जो very good idea के साथ present किया गया है कि if you want to get rid of your habit,
you'll need to become conscious first, and then you'll be able to get rid of the old habits. तो इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला मेरे पर्सनल लाइफ पे, and I'll talk about it in a second as well. So yeah, let's come to the third point now, which is gonna be about pendulums. ठीक है, तो बुक में ये कहा गया है कि when you are aware 24/7 and when you are doing the things that your ideal self would do, you would slowly transfer to the ideal reality. But there are lots of challenges in between, and one of them is pendulum. So what is pendulum? In book, pendulum को basically एक entity या फिर एक invisible energy कहा गया है, which gets created when there is a group. ये जो collective mind होती है group में, that's pendulum. To give you a good example, suppose I am a Hindu bhakt, ठीक है? Whenever I am with my other friends who are also very into Hinduism, so we start thinking like the same. We start praising Hinduism, we start talking about it, we start behaving like one. Or to give you another example, suppose मेरा एक favorite actor है, and I'm in a group of people where everybody's favorite actor is the same, so we all start thinking like the same again. तो मैं unconscious हो जाता हूँ and I start thinking like the same. Anybody who doesn't like that actor will become our enemy, and everybody who likes that actor will become our friend. तो इस वजह से my individual जो wavelength होती है, that gets out. बुक में ये कहा गया है, the vibration that I want to be in wouldn't be possible, क्योंकि मैं अब ये pendulum की wavelength पे आ जाऊँगा. So book has suggested us to get rid of that pendulum. Another good example is, suppose you're walking in the street. I think everybody has faced this situation, and you see somebody and तुम्हें left जाना होगा, but that girl tries to go to the left as well, or the guy, and if you want to go to the right, the guy or the girl tries to go in the right again. तो ये ऐसे करके बहुत टाइम तक होगा unless you go and say कि okay I want to go here, you go from here. तो why this happens, book में बहुत ही interesting reason दिया है इसके लिए. So it happens because of pendulum, and जो हमारी collective energy होती है, it talks without us talking. इसीलिए we can sense what other person is will do. I mean, we can't sense it, but we automatically do what the other person is doing, because pendulum gets created there. So that's a very good analogy there. And I was like, okay, बहुत सारी चीज़ें जो होती है, that started making sense to me. So another example which book has given is when you are in a group, you act differently than when you are alone. So if I'm alone, I act differently, and जब मैं ग्रुप पे जाता हूँ, I start acting differently. बहुत सारे लोगों को anxiety होती है, बहुत सारे लोग start pleasing people, and that's because of unconsciousness. You are not conscious around that time, and इसकी वजह से you just can't be the version that you want to be, क्योंकि you again start playing with the wavelength that pendulum has for you. इसीलिए book suggests to get rid of pendulum. There are good pendulums, there are bad pendulums. Good pendulum and bad pendulum both needs to be avoided, that the book says. ठीक है, अब इसको अगर प्रैक्टिकली समझेंगे, then हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि you need to get rid of your bad friends, क्योंकि they उनके साथ रहोगे तो what you used to do earlier, you do it again and again. So suppose you are a smoker, cigarette addict, so when you are with your friend who smoke every day, you can't change your habit. So that's the concept that book has explained with the concept of pendulum, which is again amazing. So these are the 3 points which really struck to me, and I liked a lot. और भी बहुत सारे points है जो book cover करती है. One is of plate. तो plate करके एक concept है which I'll cover in this video again. तो what book says is कि हमें तो आसानी से समझ आ जाएगा, बट बाहर के लोगों को आना थोड़ा मुश्किल होगा शायद. सो जैसे पंडित की चोटी होती है पीछे, what book says is कि we have the invisible choti, which is called plate. ठीक है, so what the plate does is कि it connects us with the power of the universe. Now before covering this topic, I want to talk about intentions which book covers. So book says कि there are 2 intentions, inner intention and outer intention. So intention को basically हम power से समझ सकते हैं. तो inner intention हो गया मेरी खुद की शक्ति, outer intention हो गया the universal power. ठीक है, so inner intention की example दूँ मैं अगर, तो suppose I want to become a millionaire, या I want to become rich, या I want to become a billionaire, जो भी है. If I start thinking about it, if I visualize it, if I go for it, if I take action, that's my inner intention. जो ये motivational pages वगैरह पे बताया जाता है
कि if you think for it you can achieve it, etc, etc. So that's inner intention. The book says inner intention is powerful, but outer intention is way too powerful than that. And the book teaches us to how to channel outer intention. So what is outer intention now? Outer intention is basically जो हम luck कहते हैं या फिर you know तुक्का या फिर whatever. That's outer intention. The power of the universe, जो ये surrounding है या फिर the whole universal force that's outer intention. It can either be for you or be against you. So the book teaches us to how to make universal power be for us. बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट में होते हैं, दैट्स वे दे गो टू द डाउनवर्ड स्पाइरल. बहुत सारे लोगों के फेवर में होते हैं, दैट दे गो टू द अपवर्ड स्पाइरल. देन नाउ हाउ टू चेंज द यूनिवर्सल पावर इफ इट इज अगेंस्ट फॉर यू टू फॉर यू. ठीक है. सो द बुक सेज इट कैन बी डन विया प्लेट. द प्लेट क्या है? इट्स द कनेक्शन बिटवीन योर बॉडी एंड द आउटर यूनिवर्स. Whenever you're asking, visualizing, thinking of something, you just need to activate a plate and ask for it. In that way, जो universal power है, it comes to you. So that's the concept which book talks about as well. So what it says is कि there is a technique जहाँ पे plate कैसे activate करते हैं भी बताया गया है. I won't get too deep into it. You can read the book Tough Tea, the High Priestess if you want to know more about this topic. But once you activate the plate, you can feel the sensation. And when I activated it, I could feel the sensation as well. There was this very interesting incident that happened to me. तो book में कहा था कि when you are activating it for the first time, second time, third time, start practicing it. Start visualizing things and छोटी छोटी चीज़ें. जैसे कि I was here at the same room. सुबह के 7 बज रहे थे and I ordered for a burger. So before the burger arrived, I imagined and activated my plate to in a way, and I imagined कि हाँ burger वाला ऐसे आएगा and I would take this way इतने time पे आएगा, and afterward I'll open the gate and certain scenarios, exactly same scenario occurred. And again the next time I imagined कि yeah, my mom would come, she would be right there, I'd open the door, she would give me milk, and exactly the same thing happened again. So these things, small things, which was very interesting to me, happened, and that was very exciting. When I was starting my agency, उस time पे मैंने सोचा था कि यार close 5 clients in a day. Starting पे it seemed very impossible. Eventually it happened. ठीक है, I closed 5 clients in a single day and 5 clients booked a call. So that was very, very amazing to me. So these are the things which the book talks about. अब plate की power will get stronger as you go. I haven't used it that much nowadays, but while I'm recording the video, I feel very interested to do it all over again and follow the whole things properly. So that's the another point. Outer intention, inner intention, plate. अब another interesting topic इस book की मैं बात करता हूँ उसके बारे में. So book says कि our life is just like a film movie. Movie की तरह है and हम actors है. This book says it. You can act like a actor and you are just here to act. This is the thing that book says. तो सभी की मूवी में एक प्री डिटर्मिन्ड स्क्रिप्ट होती है, जो स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिखी हुई है, एंड इट्स जस्ट फोल्डिंग आउट इन दैट वे. मे बी जो भी मेरी स्क्रिप्ट पे, सपोज माई स्क्रिप्ट इज़ टू इज़ टू हैव अ 9 to 5 जॉब एंड जाके 45 के में आई गेट मैरिड या वट एवर, तो वो मेरी स्क्रिप्ट होगी एंड आई एम जस्ट प्लेइंग अलॉन्ग इट इफ आई एम अनकॉन्शियस. Book says once you're conscious and you realize कि yeah, you are in a film script, you can switch from this film script to the another one. ठीक है. So what the book says is कि you are in a film script which was already written for you. तुम एक film script पे हो जो तुम्हारे लिए already written है, and अगर तुम्हें change करना है script, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि तुम्हें सबसे पहले conscious होना पड़ेगा कि हाँ मैं एक film script पे हूँ and मुझे दूसरा script चाहिए. So दूसरा script पाने के लिए what you need to do is you need to be in the vibration of the another self. ठीक है. You need to अच्छा I'm sorry, you don't need to be in the vibration. If you need to change the script, what you just need to do is you need to visualize with the plate the next script, whatever this next script you want your life to be like. So book में यही कहा गया है कि your life is like a script. ठीक है. एक एक पन्नी जैसे मूवीज होती है ना कि वन स्क्रिप्ट होता जाता है. दिस इज जस्ट योर लाइफ एज वेल. प्लेट की वजह से यू कैन विजुअलाइज द नेक्स्ट स्क्रिप्ट,
how you want it to unfold, and you can also visualize the last script ki what your ideal life would look like. So that's the thing that book has told us as well, कि you need to be aware first, उसके बाद you need to use the outer intention to imagine or to visualize or to change your script, and once you do that your life will start folding into the other script. But you need to make sure कि you are always visualizing the script that you want your life to be like. अब उस पर ये भी है कि once you start using your play to channel to the next script continuously, तुम different vibration पे भी जाओगे, and eventually you'll transfer to the reality that you want to be in. ठीक है? So you can see everything that we have talked about come to a play and it just aligns together. सभी चीज़ align हो जाती है. And there is one more thing which book says कि your life is just like a mirror. ठीक है? Life is just like a mirror. A lot of the people, अब लोगों के साथ क्या होता है, ठीक है, एक लड़का है वो डिप्रेस्ड है, उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई सपोज उसे, तो वो डिप्रेस्ड हो गया. अब वो सोचने लगेगा कि हाँ मैं इतना डिप्रेस्ड हूँ, ये वो फलाना ढिमकाना, एंड ही जस्ट फॉल्स इनटू दिस विशियस साइकिल लूप जहाँ पे वो नीचे जाते जा रहा है. ही थिंक्स कि ओके आई एम नॉट गुड लुकिंग, ओके वो लड़की ने मुझे इसलिए छोड़ा, ओके मैं इससे अच्छी लड़की नहीं पा सकता, देयर इज दिस रिजेंटमेंट, हेट फॉर हिमसेल्फ, ये सब होता है. अब बुक में क्या कहते हैं कि लाइफ इज जस्ट लाइक अ मिरर. Whatever happens to you, whatever you see outside is because of what you think inside. Whatever you want to be, you will be. Whatever you think inside happens to you. So book में ये कहा गया है. So suppose I want to become rich, but if I'm thinking कि हाँ मेरे पास पैसे नहीं है, ये वो सोचता रहा, if I have the negative mindset, if I have the poor guy mindset, तो my life would reflect that only. And another interesting thing that life said is कि the book said is कि you are the image and your life outside your environment is the reflection. ठीक है? So your life is the reflection and you're the image. So जैसी image होगी वैसी ही reflection बनेगी ना. So if you improve your image, your reflection would get better again. If you can't change the reflection directly, you need to change the image first ताकि reflection अच्छी हो. So that's another point which was pretty interesting to me, and इस पॉइंट को और भी ज़्यादा बढ़िया बना देती है इसकी नेक्स्ट पॉइंट which says कि जो ये मिरर रिफ्लेक्शन एंड इमेज है ना, इट गेट्स फॉर्म्ड इन सम टाइम. इमीडिएट नहीं होता, इसमें डिले होता है. तो सपोज इफ आई थिंक राइट नाउ कि हाँ मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, अभी तो इट वुडंट इफेक्ट मच, बट बाद में जाके इट वुड take some time to reflect. How much time, it totally depends upon person to person, but yeah, eventually that would happen. तो ये बहुतों के साथ होता है कि मेरी लाइफ अच्छी जा रही है, फिर सडनली बुरी जाती है, फिर मैं डाउन हो जाता हूँ, फिर मेरी लाइफ सडनली अच्छी जाती है, फिर मेरी बहुत ही हैप्पी होता हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, फिर वो डाउन जाती है. व्हेन आई एम डाउन द मस्ट सडनली मेरी लाइफ अच्छी हो जाती है, एंड व्हेन आई एम हैप्पी द मस्ट सडनली मेरी लाइफ नीचे चली जाती है. नाउ व्हाई इज दैट? तो बुक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया है, एंड दैट इज कि लाइफ टेक्स टाइम, द इमेज टेक्स टाइम टू गेट फॉर्म्ड. दैट इज वाई कि जब मैं बहुत ही हैप्पी हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, तभी जाके मेरी लाइफ सैड हो जाती है, क्योंकि पास्ट में मैं सैड था. अब मैं जब सैड हूँ, बट मैं पहले हैप्पी था, जब मैं सैड हूँ, जब मेरी एंड पॉइंट होती है व्हेन आई वाज थिंकिंग वेरी पॉजिटिवली, व्हेन आई वाज वेरी हैप्पी, अब वो रिफ्लेक्ट होती है एंड माई लाइफ स्टार्ट्स गेटिंग बेटर अगेन. एंड एज आई गो अप, क्योंकि उस टाइम पे आई वाज थिंकिंग पॉजिटिवली एंड द इमेज इज टेकिंग टाइम टू फॉर्म. व्हेन आई वाज डाउन, आई वाज वेरी वेरी सैड, तभी माई लाइफ गेट्स डाउन अगेन. सो पीपल फॉल इन दिस ट्रैप व्हेन इट्स up and down only. And I realized कि हाँ, that is something that was happening to my life. So if you want to just have highs and highs in your life, even when you're down, the book says to keep up with yourself and retain the phase of positivity. So that's the whole point of this whole book. I think मैंने सभी important aspects clear कर दिए, and I want to talk about few things that the book has helped me with. So the first thing the book helped me with is my business, of course. Like I've talked, clients close karna, and one of my client was sad, he wanted to fire us, and I just visualized with my outer intention that the client is happy. And suddenly, kal se he went on a call and he just was very happy with my behaviors. He was happy with our performance. He started treating with us respectfully.
So that's the second thing that has helped me with. Other thing was my discipline, awareness वगैरह से मेरी discipline अच्छी हो गई. My overall life became better. You know, मेरी I started waking up at time. ये intention use करके I started waking up at time. I started doing a lot of productive stuff. So these are the things that it helped me with. Other thing it helped me with is my relationship, of course. My body as well. I never used to gain weight. मैं जितना भी खाता था मेरी weight नहीं बढ़ती थी. And book पे एक exercise बताया गया है कि journal पे. Actually it's from a course which I went through, and it's about the reality transurfing as well. The book पे just said कि visualize yourself as a guy with weight. So I started doing it and I increased my weight as well. So it helped me in that portion as well. बाकी के और भी different portions पे मुझे help किया, but these are the major things that it has helped me with. And now I'm doing the whole thing wholeheartedly क्योंकि बीच पे I started slacking off and I don't want to do it again. So this YouTube channel is kind of like a journey for me. Make sure to keep me accountable if you want to see me, do the whole process. Follow करना मुझे. और भी videos चाहते हो, comment down any topic that you want me to cover. And that's gonna be for it for today, guys. Have a great day. Peace out. Thank you so much.